Ladies and gentlemen, for the last 18 years, no chief minister in Uttar Pradesh has fought assembly elections while being a sitting chief minister. They all were handpicked by their parties, and once they took charge of the top job, they contested elections to the Legislative Council to keep their seats. But that changed this election after BJP announced the candidature of sitting Chief Minister Yogi Adityanath from his home turf of Gorakhpur. Taking the high moral ground, the BJP dared Yogi's main challenger to take the electoral plunge. The spotlight now on Akhilesh, with pressure building even before the real challenge begins. So the speculation is building. Yogi Adityanath is contesting from his home turf in the 6th phase of polling, a constituency that has elected him to the Lok Sabha on 5 previous occasions. Will Akhilesh Yadav follow a similar pattern? If it seems so, because sources are now telling Times Now that the Samajwadi Party chief could take the electoral plunge from Gopalpur in the Azamgarh constituency, which is one of the 5 assembly segments in the Lok Sabha constituency that Akhilesh currently represents. In fact, this question was even asked to him at a press conference today, and he said that, he would actually try and get the people's perspective on the ground, and if they wanted him to contest, he would. Listen. आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। But today was not just about doubt for the Samajwadi chief and his party. It was also a day that marked desertion. Akhilesh's own sister-in-law, Aparna Yadav, dumped the family party for the BJP. Word is that she wanted a party ticket from Lucknow Cant, but was denied the same seat by Akhilesh, prompting her to jump ship to his main rival, the BJP. Whether the Saffron Party obliges her, that only time will tell if she's given a ticket for Lucknow Cant. But for now, Aparna Yadav is more than happy to be working to realize Yogi's re-election dream. Listen in. मेरे लिए हमेशा से राष्ट्र धर्म हमेशा सर्वोपरि रहा है। मैंने राष्ट्र की आराधना के लिए भाजपा को चुना है। जब आपने बीजेपी ज्वाइन किया तो आपने मुलायम सिंह जी से आशीर्वाद लिया हो, क्या उनका आशीर्वाद आपके साथ है? बिल्कुल है, मैं परिवार से कोई विमुख थोड़ी ना हूँ जी। आपके लिए वो कैंपेन करेंगे? इस तरीके की बात नहीं है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में कौन आपको बेहतर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार? देखिए, हमारे पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी दोबारा सरकार बना रहे हैं और फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। While the BJP firmly believes that Aparna Yadav's entry into their fold is a definite edge, including the chief minister, will it really have any difference on the ground? And will Akhilesh's constituency conundrum affect his party's prospects? Let's weigh the opinions. While some might argue that Aparna is politically inexperienced, with her only electoral appearance ending in a loss, and that this decision only touches a raw nerve for the family and maybe just a psychological impact on the Samajwadi Party. But other people are hopeful she could help the BJP tap into the women vote bank with the charitable work that she has in her CV. As for Akhilesh Yadav, the fact that the BJP seems to have put him in a spot, Samajwadi Party and its supporters would believe that whether he contests from Azamgarh or not doesn't really change his CM prospects. But there are also those who believe this is a perfect opportunity for Akhilesh to prove a point and prove his electoral and leadership ability. Speculation is rife that there are calls from within the party that we are hearing that Akhilesh should be contesting the poll, or his inability will be seen as a sign of weakness. And that brings me to the legitimate question on the Newshour tonight. And the question is simply this: optics
is equal to advantage in politics? That's the question and that's the debate. Akhilesh, seat suspense. That's the debate coming up on the other side. You're watching the News Hour at 9. Debate number 1 on Times Now. Super Prime Time. Joining me tonight, Shehzad Poonawala, spokesperson of the BJP, Dr. Anand Ranganathan, author, scientist, Ashutosh, my friend, senior journalist, Sanjay Jha, suspended Congress leader. But my first question goes to Mr. Vivek Silas, spokesperson of the Samajwadi Party. Vivek Silas, itni soch, itna hichkichana kyun? Why doesn't Akhilesh Yadav decide his strategy? After all, his opponent, Yogi Adityanath, is fighting, contesting from Gorakhpur, which comes in the 6th phase of polling. And the seat was announced in the first list by the BJP. Akhilesh's, non-decision, do you think that's going to be seen as a sign of weakness, Mr. Vivek Silas? Very good evening to you, Navika ji, and all the panelists. About a week or 10 days back, I was debating on Times Now with Rahul Shivshankar ji, and the same question he asked me. And that time also I said that Mr. Akhilesh Yadav will definitely be contesting the MLA election from Uttar Pradesh in 2022. Speculations are being made that he'll be contesting from Azamgarh. Yeah, definitely. I'll tell you why. Because Akhilesh Yadav is already a member of the Lok Sabha from Azamgarh. He has a great connect with people of Azamgarh. So he'll be asking whether I should leave the Lok Sabha and contest the MLA seat. And as and when required, we'll be, telling you from which constituency he is going to contest. It's not like our Chief Minister Yogi Adityanath ji, who said he'll be contesting from Mathura, Ayodhya, Devband, Kashi, Prayagraj, and finally he was sent to Gorakhpur. Though he is destined to go to Gorakhpur on the 10th or the 11th of March, but it's good that the Bharatiya Janata Party has sent him to Gorakhpur at the moment. It's good for him. I think he should stay in Gorakhpur, it will be better for him. कहानी थोड़ी पुरानी नहीं है, नई कहानी बताइए ना. ये वाला लाइन आप पहले भी यूज कर चुके हैं. इस वक्त तो सवाल ये है कि आप नई कहानी भी सुन लीजिए नाविका जी. आप तीन मंत्री ले गए थे योगी आदित्यनाथ जी के कैबिनेट से, अब बहू ले आए हैं वो आपके फैमिली की. कैसा लग रहा है? ब्लड प्रेशर? Ma'am, nothing is surprising for the Samajwadi Party, and there is no reason for Bharatiya Janata Party to smile at all. I'll tell you why. I need to ask a basic question to you, Navika ji. स्माइल करने वाले सिर्फ डॉक्टर आनंद रंगनाथन और आशुतोष जी हैं. ओके, बहुत कुछ केशव प्रसाद मौर्य बहुत हंस रहे थे और लोग भी बहुत हंस रहे थे. I just want to ask, what is the contribution of Aparna ji in Indian politics or the politics of Uttar Pradesh? What is her fan following? A person who has never been a member of any house when you gave in her UP a Assembly. ticket last time, what were her qualifications then? Exactly. Yeah, ma'am. Exactly. That is what I was just going to tell you, ma'am. You asked me the same question. She fought from the Samajwadi Party and lost. That is a history, and we cannot deny it. And if we see today, the weakness of the Bharatiya Janata Party has been revealed. That a person who has not won a single election in his life or in her life was greeted by Chief Minister Yogi ji, JP Nadda ji, KP Maurya ji and Satendra Dev Singh. I need to ask as to what the advantage that the Bharatiya Janata Party has in the joining of Aparna ji. Rather the disadvantage, I'll tell you what is it. Rather the disadvantage is that Rita Bahuguna ji. शहजाद पूनावाला, आप इज्जत दें किसी को तो तकलीफ, ना दें तो तकलीफ. और मैं पूछना चाहती हूँ, what is the achievement of Aparna Yadav that you have taken her with such fanfare into your party? That's the question raised by Mr. Vivek Silas. Is it beyond just that little twinge of revenge that you're feeling today, or is there something beyond that? नाविका जी, पहले तो आपके शो में भाग लेने का अवसर मिल रहा है और मुझे लगता है ये
कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो चैनल की एडिटर इन चीफ और प्रमुख संपादक एक तरीके से एक महिला है, उन्हीं के शो पर ये बॉयज विल बी बॉयज वाले आकर कहते कि एक महिला की वैल्यू, और यदुवंशी एक महिला है, उनकी वैल्यू केवल ऑप्टिक्स तक है, वरना उनका कोई काम नहीं है। तो इस प्रकार से जो सेक्सिस्ट पेट्रियार्कल सोच बॉयज विल बी बॉयज वाली पार्टी में पहले से इंग्रेन्ड है, इसीलिए गायत्री प्रजापति को लेकर घूमते थे और बलात्कारियों से लेकर दंगाइयों तक इन्होंने लिस्ट में टिकट दिए सबको। आज उन्होंने फिर से एक बार एक महिला का अपमान किया है और मुझे लगता है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और किसी के विषय में कभी ये नहीं कहा जाता, पर महिलाओं के विषय में जिस प्रकार से ये बॉयज विल बी बॉयज वाली पार्टी बोलती रहती है, फेयर पॉइंट विवेक साइलेंस, फेयर पॉइंट। व्हाई अंडर एस्टिमेट अ वुमन, बिकॉज देयर कैन ऑलवेज बी अ फर्स्ट टाइम शी कैन विन फॉर द फर्स्ट टाइम मे बी विद द बीजेपी। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। यस शहजाद, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। नाविका जी, मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। जो पिता का नहीं हुआ, जो चाचा का नहीं हुआ, जो बहू बेटी का नहीं हुआ, जो परिवार का नहीं हुआ, वो उत्तर प्रदेश का क्या होगा? आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक संदेश चला गया है कि आज मुलायम सिंह यादव जी, जिनको मैं बहुत सम्मान करता हूं, उनकी भी बहू बेटी कह रही है कि योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी के शासनकाल में कानून के राज में वो सुरक्षित है, पर ये जो मियां जान वाला माफियाओं का निजाम है उसमें वो सुरक्षित नहीं। और इन्होंने तो साबित कर दिया पहली लिस्ट में, एक जेलधारी नाहिद हसन से लेकर बेलधारी मोहम्मद अली पप्पू को टिकट देकर पार्टी में लेकर दंगाई कसाई को अपने टिकट देने वाले समाजवादी पार्टियों ने बता दिया है ना खेती ना बेटी किसी को सुरक्षित रखने के ये मूड में नहीं है। और इसीलिए आज अपर्णा यादव जी न केवल एक महिला के रूप में परंतु उन तमाम उत्तर प्रदेश की बहू बेटियों के रूप में वो हमारे साथ शामिल हुई है, यह संदेश देते हुए कि अगर बहू बेटी सुरक्षित है, महिलाएं इंडिपेंडेंट है, तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। यह आपको जवाब मिला है अपर्णा यादव से। और कभी किसी महिला को रिड्यूस मत करना कि वो चुनाव नहीं लड़ सकती, वो कुछ वोट नहीं ला सकती, वो महिला तुम्हें बता देगी। आप पहले ये तो जवाब दीजिए, पहले ये जवाब दीजिए कि अखिलेश बाबा को क्यों लगता है इतना डर कि भागे वो आजमगढ़? विवेक साइलेंस, यू वांट टू टेक बैक योर वर्ड्स अबाउट अपर्णा यादव? सीट चुनते हो सुरक्षित। मैम एक मिनट, मैं बोल लूं। महिला विरोधी शहजाद जी ने काफी कुछ इनके अंदर डीएनए में है, ये आज उन्होंने महिला विरोधी सोच का प्रदर्शन किया है। विवेक साइला जी, मैं आपको बोलूंगा कि आज उत्तर प्रदेश की 50% आबादी इस शो को देख रही है, नाविका के शो को, और वो आपको मुंह तोड़ जवाब देगी कि आपने जिस प्रकार से एक महिला का अपमान किया है, और ये तो इनका चरित्र बन चुका है महिलाओं का अपमान करना। इनके जमाने में बलात्कार होते थे, बलात्कारियों के लिए कैंपेनिंग अखिलेश यादव करते थे। अपर्णा यादव जी इसको बदलेगी। अपर्णा यादव जी एक महिला है, मैं पूछना चाहता हूं, आप तो आपने पहले स्टेटमेंट में ही अपना गोल सेल्फ गोल कर लिया, अब तो शहजाद पूनावाला जैसे डिबेटर आपको छोड़ने वाले नहीं है। तो विवेक साइलेंस, लेट्स गेट सीरियस। आई मीन जस्ट बिकॉज शी इज अ लेडी, यू नो, कैन यू एक्चुअली से दैट शी इज वर्थ नथिंग, इट्स जस्ट ऑप्टिक्स, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। अगर इज्जत दे रहे हैं किसी को तो क्या ये खराब बात है? नंबर वन। नंबर टू, many people don't win elections. Maybe the second time they try, they will win. Why are you discounting? मैम, मैं ये कहना चाहता हूं मैम कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने तो बैठते ही सबसे पहले आज कहा था कि उनको बहुत बहुत बधाई, भारतीय जनता पार्टी को भी बधाई, उनको भारतीय जनता पार्टी मुबारक और भारतीय जनता पार्टी को वो मुबारक। ये स्टेटमेंट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा था। मैं सिर्फ एडवांटेज और डिसएडवांटेज कह रहा था कि एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। उसको शहजाद जी को कोई काम नहीं है, फिर सिर्फ कम्युनलाइज करना, नफरत फैलाना और दरिंदगी फैलाने के सिवा शहजाद भाई कुछ नहीं करते हैं। को चुनाव लड़ाने से एडवांटेज, असलम चौधरी को चुनाव लड़ाने से एडवांटेज, और अगर हम अरुण को ले तो डिसएडवांटेज। अगर हम अपर्णा यादव जी को ले तो डिसएडवांटेज। जो आपने टिकट दिया है को ले तो एडवांटेज, और अगर हम समाज के शोषित वर्ग को ले, हम अगर महिलाओं को मौका दे तो हम डिसएडवांटेज। सबसे ज्यादा समीकरण है। दूसरी बात, नाविका जी, मेरी बात नहीं हुई। One minute, gentlemen. Let me get in the other panelists. One minute. Ashutosh, you know, basic mudda is Gorakhpur versus Azamgarh. Where is this whole? What your double standards are? Let me tell you that. क्या हो गया? किसके डबल स्टैंडर्ड्स हो गए? एक लाइन, नाविका जी, एक लाइन, केवल एक लाइन।
केवल जनता पार्टी के नाविका जी केवल एक लाइन they have given 26 tickets to people who are involved in heinous crime out of 107. What are they talking? They have just need to polarize. This will not do work. Okay. 10 seconds. Make your point, Shehzad. एक लाइन, केवल एक लाइन। नाविका जी, ये क्या है? पिछली बार राहुल गांधी को साइकिल की कैरियर पर बैठाकर घूम रहे थे तो उन्होंने राहुल गांधी से वायनाड राहुल गांधी को ले आए। वायनाड मॉडल मतलब अखिलेश बाबा को लगे डर तो भागे आजमगढ़। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये तो कह रहे थे 400 सीट जीतेंगे तो लड़ लीजिए गोरखपुर से। आप तो कल तक कह रहे थे। देखिए नाविका जी, ये अनफेयर है कि ये मेरे भी बीच में बोलेंगे, ये अपर्णा जी का अपमान भी करेंगे, ये महिलाओं का अपमान करेंगे, ये शोषित समाज का अपमान करेंगे, यादवों का अपमान करेंगे और फिर मेरे बीच में बोलेंगे। ये नहीं चलेगा। अब मुझे बोलने दीजिए नाविका जी। महिलाओं को कितना मेरा केवल एक सवाल है, देख लिया नाविका जी प्लीज। All right. टाइम वेस्ट करेंगे, केवल टाइम वेस्ट करेंगे। No. Everybody can't speak at the same time. You wanted to say one line, Shehzad. You've said it. Let me get in Ashutosh. Ashutosh ji, I'll come back to you people. Baba, I'm not going anywhere. ना गोरखपुर जा रही हूँ, ना आजमगढ़ जा रही हूँ, यहीं बैठी हूँ स्टूडियो में, अभी आऊंगी आपके पास। आशुतोष जी, I want to just ask you. I want to just ask you. This prevarication over Azamgarh. I'll ask the people, I'll take the permission of people of Azamgarh. I will announce, I will fight, but let me see. I might fight, I might not fight. Do you think pressure is building up on Akhilesh Yadav to contest election because Yogi Adityanath has thrown a bait by announcing his candidature and his party has announced it from Gorakhpur? Do you think, Akhilesh is going to go back to the MY formula, which is what Azamgarh is all about? आप ना तो आजमगढ़ जाइए ना ही गोरखपुर जाइए, आप नोएडा में रहिए, वहीं चुनाव लड़िए, मैं आपको वोट दूंगा पक्का 100% आपके लिए। एक वोट तो चलो मेरा पक्का हुआ, चलिए। बिल्कुल। ये देखिए बेसिक बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर एक नई अजीब सी परंपरा निकल आई है कि लोग लोकसभा का चुनाव तो लड़ लेते हैं लेकिन विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ते। अगर आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं तो आपको मुख्यमंत्री के चुनाव भी लड़ना चाहिए और मुझे लगता है इस मामले में योगी आदित्यनाथ ने एक अच्छी परंपरा का परिचय दिया है, क्योंकि आप विधानसभा का चुनाव नहीं लड़के बैकडोर से अगर एंट्री करते हो दैट डजंट अगर वेल विद द पॉपुलेशन एंड डजंट सेंड अ वेरी गुड सिग्नल इन दैट। आई थिंक इट्स गुड that at least Akhilesh Yadav has given a hint that he is willing to contest from the Azamgarh. He's saying that he's taking all kinds of consultation with the people and what the people will think will come over. I think he's under pressure today, and it's under pressure because Yogi Adityanath has decided to contest. So in my opinion, if you take that, then if this election is a bipolar election, if there is a presidential form of election where the public has to choose Yogi Adityanath and Akhilesh Yadav, then in my opinion, maybe others can differ, this will be disadvantageous to BJP for the simple reason because UP is caste divided. There is a clear difference between upper caste and the lower caste. In that sense, Yogi Adityanath will, since he has been identified as somebody who belongs to the upper caste and he does Thakur politics and all that. In that sense, Akhilesh Yadav can always say that if OBC can have a chance to get somebody elected, then it is he. In that sense, it is an advantage. But I'm 100% sure that it is because BJP has chosen Yogi Adityanath to contest election. That's why Akhilesh Yadav is also thinking to contest election, and I'm sure he will contest. आशुतोष जी, थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि आपने सैफरन जैकेट पहन ली है क्योंकि आपके व्यूज भी थोड़े supporting of Yogi Adityanath हो गए. For a minute, I seem to mistake कि आज आपको हुआ क्या है. और Dr. Anand Ranganathan, very valid point made by Ashutosh ji. He says, and it's something that we've all been saying, that if you are going to run a state, then you might as well contest the elections. You can't always come in from the council and not be part of the legislative assembly. Number one. Number two, obviously, Yogi Adityanath's announcement of his contesting has led to some amount of pressure. But do you think Akhilesh Yadav's prevarication in itself will be seen as a sign of weakness, of dilly-dally? Good evening, Navika, and good evening to all my fellow panelists, and a big hello to Ashutosh, our good mutual friend. Ever since Ashutosh quit politics, he's looking fitter, stronger, younger,
and he's making more sense. So, kudos to you, Ashutosh. And by the His way, color choices have also changed. yes, and just so that Sanjay doesn't feel left out, ever since he's been suspended, he's been making more sense as well. But to come back to the issue, Navika, there are 4 points. Number one, you're absolutely right, and here I completely agree with my good friend Ashutosh, that if you are fighting for the seat of the chief ministership, and you're young, and you're able, and you're leading a party, then by all means you have to contest the assembly elections. Otherwise, I don't know whether someone can call it a sign of weakness, but certainly it would not be a sign of leadership. Let's put it that way. So I think Akhilesh should pick up the gauntlet that has been thrown by Yogi Adityanath, and Ashutosh is absolutely right, and he must fight. Number two, I come to my good friend Shehzad, and he's making such tremendous political sense. I don't know, I think Shehzad should also be one of the candidates in the UP election. आज तो बहुत ही बाजी मार ली शहजाद ने. इन्होंने कहा जब लगा डर पहुंच गए आजमगढ़. अब I don't know what Shehzad is insinuating, but if the parallels with Wayanad cannot be ignored. You see, Wayanad Muslim population, Navika, is 45%. Azamgarh is one of the very high Muslim majority constituencies or areas. I think 37% is the Muslim population, if I'm not wrong. So that, I don't want to sound very cynical, but we live in cynical times. So the point is that all that en bloc, en masse that vote will go to Akhilesh, will not go to the BJP candidate. And of course, there is Mr. Nafiz Ahmed, who is the erstwhile or the sitting SP MLA there anyway. I don't know where he'll be asked to fight from if Akhilesh fights from Azamgarh. But let me also put in the other 2 quick points. Number one, Akhilesh has, much to his remorse, publicly admitted that he is superstitious. Now, you just said for 18 years, no sitting chief minister or an aspiring candidate has actually fought an election. Yogi, on the other hand, is not. Akhilesh admitted that as a chief minister, he dare not visit Noida because any chief minister who visited Noida never went on to become the chief minister for the second term. So much for him being educated from abroad and, a management graduate. He is superstitious. Number 4, and this is very important, and I have to bring in here all this U-turn thing that is going on, and, बरसाती मेंढक जैसे आप कह रहे हैं, और ये इसमें दोनों शामिल. जैसे विवेक जी ने बात करी, और आई थिंक ये काफी डेरोगेटरी था, बिकॉज उनकी फैमिली की, आप महिला की, आप ऐसे, विवेक जी, हालांकि मैं आपकी बात समझ सकता हूं, आप, यू कैन नॉट बी सो डेरोगेटरी. यू शुड हैव विश्ड हर बेस्ट ऑफ लक. यू कुडंट हैव सेड दैट अरे भाई ये फेलियर है और ये आज तक जीती नहीं है, ये जो भी है. बट पॉइंट ये है कि अब वो सडनली कॉम्युनल बिगट हो गई क्या मिसेस यादव? ये विवेक जी से सीधा सवाल है, और शहजाद जी से सीधा सवाल है. अब जो ये मौर्या है, अब ये दूध के धुल गए क्या? Now the point is that when people are switching parties en masse, I don't want to give the specter to the BJP, but I hope they have learned the lesson from Bengal. This was a once in a, I would say, millennium chance for BJP to win Bengal, and people were worried. So was Mamta. But what did they do? They gave majority of the tickets, or 30 to 40% of the ticket, to TMC turncoats. And what did the Bengalis do? They kicked BJP out. So, this kind of thing is a double-edged sword, and I hope both SP and BJP realize this. Respond, Shehzad, before I get in Sanjay Jha. Look, Navika, now we are talking about Uttar Pradesh, and I think every election lessons are learnt, and every election lessons are taken as feedback, and we go forward accordingly. Now, why we took Aparna Yadav is very clear. Aparna Yadav has been supporting the Prime Minister's initiatives and Chief Minister Yogi Adityanath's initiatives for a very long time, and she's an independent, capable person. As far as who will contest, who will not contest, that will be decided later by the party. When the time comes, we will be announcing that. But having said that, we don't need anybody's support, because we still have more than 100 MPs from the OBC community who are sitting in Parliament today, more than 95 OBC MLAs who are sitting in the State Assembly even today. The Prime Minister himself comes from the OBC community and is the first Prime Minister to complete his whole tenure. But I have a counter question. Akhilesh Yadav ji told Navika on your channel and other channels कि 400 सीट आ रही है हमारी. अरे भाई 400 सीट आ रही है, और जब वो विश्लेषण हो रहा था अयोध्या से या मथुरा से योगी जी लड़ सकते हैं, तो इन्होंने कहा कि गोरखपुर बड़ा अनसेफ है, इसलिए वहां पर जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी. तो आज मैं कह रहा हूं कि अनसेफ है ना गोरखपुर, तो आइए लड़ लेते हैं गोरखपुर में. अखिलेश यादव जी को कहिए
चलिए ना गोरखपुर से एक बार ट्राई कर ले, या चलिए गोरखपुर छोड़ दीजिए, अयोध्या ही से कर ले, मथुरा से चुनाव लड़ ले, क्यों आजमगढ़ जा रहे हैं? आजमगढ़ जाने में बहुत बड़े संदेश है, और उसका संदेश है MY मतलब वो नहीं जो आनंद जी बोल रहे हैं। MY मतलब माय, ये पार्टी ही केवल माय वाली है। अब हम बताते हैं हम MY को डिफीट कर रहे हैं VVV से। ट्रिपल V इज वर्सेस MY। ट्रिपल V क्या है? विकास का काम, विरासत का काम, काशी विश्वनाथ का काम, कुशीनगर एयरपोर्ट का काम, एक्सप्रेसवे का काम। आज एक भी खबर आपको नहीं आ रही होगी जापानीज एंसेफेलाइटिस की, ये व्यवस्था का काम। सो दिस ट्रिपल V विल डिफीट दिस माय, जिसकी वजह से आजमगढ़ गए। Sanjay Jha finds that amusing. Sanjay Jha, what is so amusing in what Shehzad is saying about triple V? Yeah, Navika, I rarely object to, people getting time on a show, but I need to tell you that you're giving disproportionate time to the BJP spokesperson to indulge in what I call as prepared Bollywood dialogue bazi. He has to do it. Let him do it from an election stump. Let him not try to abuse Times Now platform here for doing his cheap propaganda. Come on. Now let me answer your question. I think it's I give equal and more time to suspended leaders of parties also. Come on. Yeah, that's all right. No, I said I'd never do that, but today I needed to make that point. But the larger issue that needs to be addressed is the hypocrisy, and I call it the shamelessness of the BJP, which has Unnao rape case to talk about, where a BJP leader has been convicted and arrested. You're talking about Hathras, and here you are uttering platitudes on respect for women? I mean, does the BJP believe that the people who are watching Times Now, a very popular show, Navika, your program is hugely watched. I mean, do they have any respect for the viewers of the show? Do we not need to talk about Katwa? Do we need to, I can kind of right now give you all the statistics that you want. So I do believe that the bottom line in this election, Navika, is not about Azamgarh or Gorakhpur. Now, did you see that? He's already interrupting me. Did you see how insecure he is? He's already interrupting me because he's rattled. He's rattled, so he's already interrupting me. My dear friend, take a deep breath. Calm down. Calm down. I'm finishing. Calm down. Chill down. All right, buddy, I'm finishing. You may suspend Sanjay there he goes. Congress. There he goes. But the Congress within him continues. Navika, he just proved my point. All right, Shehzad, I'll give you time to rebut. Let him complete his point. I have seen your hand going up. I'll give you time to rebut. Allow him to complete his point. Shehzad. And Navika, I think the germane point that we should talk about, whether it's like if Akhilesh fights from Azamgarh, that's his fundamental right. But the SP cannot say that Yogi Adityanath is fighting from Gorakhpur because it has got a majority Hindu population. I mean, that's a preposterous debate. I mean, everyone plays to their advantage whatever they perceive it to be. But to give everything a communal, kind of a color, I think is being brutally unfair. I think the larger point that we should be discussing also today is the fact that out of the number of candidates announced by the BJP, 40% have criminal antecedents. And that to me is the most dangerous sign for India's political ecosystem going forward. No. And why is it not dangerous for you to see the statement of Priyanka Maurya when you have a slogan of Ladki hoon, lad sakti hoon, and Priyanka Maurya's name is used as that ladki who can fight, and no ticket is given to her? That's not a problem that the Congress should also look within themselves. But let me get in Vivek Silas. Yeah. Let me get in Vivek Silas. Vivek Silas, you wanted to make a point, and the point is, why is everything boiling down to Hindu Muslim? MY. Azamgarh, MY. Why? And Shehzad is absolutely right. In my interview, Akhilesh Yadav has said, हमारे तो 400 आएंगे और योगी आदित्यनाथ जो हैं वो गोरखपुर से नहीं लड़ सकते क्योंकि वहाँ वो हारने वाले 2018 में भी हारे थे. So I'm asking you, when he goes back to Gorakhpur, you say, अरे, it's his stronghold and he has gone home. And when he was, talking about Mathura or Ayodhya, speculations were going on. You were saying that, oh, he wants to play the Hindu card. You can't have it both ways, can you? मैम बिल्कुल, ये MY वाला चक्कर जो MY वाली जो बातें ये भारतीय जनता पार्टी करती है, समाजवादी पार्टी नहीं करती। और गोरखपुर की जहां तक बात कर रहे हैं तो हमारे योगी आदित्यनाथ जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि
मुख्यमंत्री होते हुए गोरखपुर से लोकसभा का उपचुनाव हार गए थे और फूलपुर से वो डिप्टी सीएम वहां से भी हार गए थे, उसको भी छोड़ दीजिए। अभी पंचायत का चुनाव देख लीजिए, सदस्यों का, चेयरमैन की बात नहीं कर रही। चेयरमैन में तो इन लोगों ने काला धन लगा के, मसल पावर लगा के, गुंडाई करके जीत लिया। मैं सदस्यों की बात कर रहा हूं जो सीधे पब्लिक देती है वोट। गोरखपुर हारे, काशी हारे, प्रयागराज हारे, अयोध्या हारे, मथुरा हारे, आगरा हारे, बरेली हारे, लखनऊ हारे, जीते कहां ये बता दीजिए। ये भी आदित्यनाथ जी के अंडर ही में हुआ था। और गोरखपुर में क्या बोला था? गोरखपुर वो जगह है जहां पर बच्चे ऑक्सीजन से मर गए थे, वो भी योगी जी के सरकार में ही। गोरखपुर वही जगह है जहां मंत्री आप क्यों ले रहे हैं? जो हारी हुई पार्टी है उसके मंत्री लेने में आपका क्या इंटरेस्ट है? अगर वो सब जगह हारने वाले हैं तो अखिलेश जी जल्दी से सीट क्यों नहीं अनाउंस कर रहे? कहीं से भी लड़ ले, जहां जहां से बीजेपी आ रही है, काशी से, मथुरा से, कहीं से भी लड़ ले। मैम, हम लोगों को ले नहीं रहे हैं, लोग खुद आ रहे हैं। और आपको तो, हमको तो मना करना पड़ा। नहीं, योगी जी की पूरी कैबिनेट इस समय समाजवादी पार्टी में होती, पूरी की पूरी कैबिनेट। बिकॉज योगी जी की कैबिनेट भी योगी जी से सेटिस्फाइड नहीं है, योगी जी की कैबिनेट भी उनका विरोध कर रही है। आपको 2 साल पहले याद होगा, 200 विधायक सड़क पर बैठ गए थे योगी जी के खिलाफ, यही लखनऊ में विधानसभा के सामने 200 विधायक। तो हमने मना कर दिया, नहीं तो पूरी कैबिनेट समाजवादी पार्टी में आने के लिए तैयार थी। हमने मना कर दिया, भैया अब हमको नहीं चाहिए। आनंद रंगनाथन wants to come in on that. आनंद रंगनाथन wants to come in on that. नहीं, बिल्कुल नाविका जी, मैं सिर्फ बहुत जल्दी 2 पॉइंट रखना चाहता हूँ। 2 पॉइंट। एक, जो संजय जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है एक्चुअली, एंड आई कॉम्प्लीमेंट हिम। द ओनली थिंग इज, एंड ऑफ कोर्स आई कंडेम द इंट्रोडक्शन or the seeping in of any criminal content as far as our legislative assemblies or indeed parliament is concerned, and that is the problem. Sanjay, the issue is endemic. Do you know, in a state like Kerala, which has 100% literacy, 24% of all the MLAs are facing serious criminal charges of kidnapping, rape and dacoity. Now, if Kerala can do that, do you know, when Akhilesh Yadav was the chief minister, his assembly, legislative assembly, 34% of MLAs face serious charges. So I don't know what to do. Even our parliament, current parliament, 29% are facing serious criminal, according to the Association of Democratic Reform. What can you do? You people, politicians, have to sit together and analyze this situation. Having said that, as you know, Sanjay, a man is innocent until proven guilty. So these are not convicted politicians; these are accused. So there is a discrepancy there which needs to be highlighted. Number 2, very quickly, and here I ask both my good friend Shehzad and Vivek ji. ये जितने टर्न कोर्स आप दोनों की पार्टीज में आए हैं, क्या आप आज नाविका जी के शो पे ये प्रॉमिस करते हैं कि कल तक आप जो इनको करप्ट और गालियां दे रहे थे, आज इनको टिकट नहीं देंगे? हाँ या ना? दोनों से सीधा सवाल है मेरा। जवाब दीजिए शहजाद। जी, मैं नाविका जी जवाब दूंगा। उससे पहले 2 लोगों ने इससे पहले बोला, मैं उनका पहले जवाब दूंगा, क्योंकि ये तथाकथित विपक्ष है और कुछ लोगों को आप सस्पेंड कर सकते हो कांग्रेस से, पर उनके अंदर का कांग्रेस सस्पेंड नहीं होता और इसलिए वो वन आइड एनालिसिस करते हैं। इन्होंने बात की महिला सुरक्षा को लेकर। राजस्थान में अलवर मामले में, जिस पर आप आवाज उठा रही है नाविका, अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए। अभी तक राजस्थान नंबर 1 है रेप में, एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से। 10 जो शहर है, जो सबसे डेंजरस शहर है देश में रेप्स के मामले में, और आनंद रंगनाथन को कंपाइल करते हैं, उसमें से 8 राजस्थान से। आज उत्तर प्रदेश का एक भी सिटी उसमें, उस शहर में नहीं है, उन 10 की सूची में नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में 30% से रेप के मामले घटे हैं। आज बलात्कारी दंगाइयों को जेल में डालने का, उन पर गैंगस्टर एक्ट लगाकर उनके संपत्ति को जब्त करने का काम हो रहा है। पर यहां पर संजय झा जी कहते हैं कि बलात्कार के मामले में यह है और राजस्थान के बारे में कुछ नहीं बोलते। दूसरा उनका एनालिसिस बड़ा एकदम अजीबोगरीब है। कहते हैं क्रिमिनल्स की बात करते हैं। 54% ऑफ अखिलेश कैबिनेट, सर फॉरगेट द असेंबली, कैबिनेट ऑफ अखिलेश इन 2012 वाज क्रिमिनल्स। अखिलेश की सूची उठाकर देख लीजिए। एक जेलधारी नाहिद हसन और लास्ट में बेलधारी हाजी यूनुस। एक है आपका मुहर्रम अली पप्पू, दूसरा है असलम चौधरी। इसके बारे में संजय झा नहीं बोल सकते क्योंकि दी ओनली थिंग सस्पेंडेड इज संजय झा। Answer Anand Ranganathan's question. Ma'am, I need to answer. The question is for the Samajwadi Party. All right. And Vivek Silas, when you're answering Dr. Anand Ranganathan's question, I also want you to answer one more question of mine. स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिनको आपने लिया है, उनका सबसे बड़ा कंप्लेंट है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में
एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और युवा जो है बहुत डिससैटिस्फाइड है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनका खुद का पोर्टफोलियो लेबर और एम्प्लॉयमेंट था। तो जिस चीज़ के लिए वो बदनाम कर रहे हैं योगी सरकार को, उसके इंचार्ज तो वो खुद थे। तो इसका भी जवाब दे दीजिए। और पॉवर्टी एलिविएशन, आपने अभी आंकड़े भी गिनाए कि कितने लोग पॉवर्टी के नीचे चले गए, क्या क्या हो गया। तो इन सब के जिम्मेदार अगर कोई हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी। जी मैम, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने नहीं कहा, ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा, दारा सिंह चौहान ने ही कहा, स्वामी प्रसाद जी ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्ग की अनदेखी की गई, उनको सप्रेस किया गया, उनको कुचला गया, उनका कोई काम नहीं हुआ, जो कि बिल्कुल साफ साफ सामने है। मैं तो सबसे पहले नाविका जी आपको बहुत धन्यवाद दूंगा और हाथ जोड़ के धन्यवाद दूंगा कि आपने, आपके दूसरे हिंदी वाले चैनल ने, नवभारत ने संजय निषाद जी पे एक स्टिंग किया था, जिसमें वो कह रहे थे कि मैं वो गुंडा हूं जो हत्या करा सकता हूं, थाना फुकवा सकता हूं और मर्डर करा सकता हूं चुनाव जीतने। उन्होंने ये भी, मैम प्लीज मुझे खत्म कर लेने दीजिए ना, यहां लॉ एंड ऑर्डर की भी बात हो रही है, मैम प्लीज मुझे खत्म कर लेने दीजिए। और उन्होंने प्रभु राम के जन्म पे सवाल उठाए। उन्होंने कहा महाराजा दशरथ जो थे वो इंपोर्टेंट थे। भारतीय जनता पार्टी और शहजाद पूनावाला जो बैठ के यहां हंस रहे हैं, इनसे पूछिए ऐसे आदमी से आपने गठबंधन कर लिया उत्तर प्रदेश में, जो प्रभु राम को गाली देता है, तो दे नहीं रहे, महाराजा दशरथ को गाली देता है, उनके साथ आपने गठबंधन कर लिया और यहां बैठ के भाषण दे रहे हैं, यहां बैठ के भाषण दे रहे हैं शहजाद पूनावाला। आशुतोष जी, हिम्मत है गठबंधन तोड़ दो। आनंद रंगनाथन ने कैमरे पे कुछ लगाया हुआ है, आप ही का लेख है। गोरखपुर से क्यों भाग रहे हैं योगी, क्यों भाग रहे हैं योगी, आपने लिखा था। शायद उसके बाद ही उन्होंने इस रंग का जैकेट पहनना शुरू किया। आप म्यूट पर हैं। आशुतोष, आप म्यूट कर दिया आपने अपने आप को। नहीं, बिल्कुल सही है। मैंने ये तब किया था जब आप सब लोग ये तय कर रहे थे कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तब मैंने सवाल पूछा था कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी पॉपुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां से वो 1991 के बाद कभी हारे नहीं है और 2002 के बाद से तो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से गोरखपुर अर्बन से लड़ रहे हैं, वहां जीते हुए हैं, तो क्यों भाग रहे हैं वहां से? कौन कहां से भाग रहा है, कौन कहां से जीत रहा है, ऑल दैट वी विल नो ओनली ऑन द 10th of March. But for the moment, of course, every day is about a match and a service, a game of tennis that's going on. Today, it's advantage BJP when it was advantage Samajwadi Party last week. Will Aparna Yadav change the fortunes of the BJP's fight in Uttar Pradesh? We don't know. Will Akhilesh Yadav decide to turn the disadvantage that he's currently facing, because people are asking questions on whether he will contest in these elections after Yogi has made the first move? We don't know. Well, but all eyes are out, because all of this, as much as it is part of fight on the ground for the last vote that will count, is also about psychological warfare. So who's ahead in the psychological warfare? Well, you make your own decisions, because last week was something else, this week is another story. And as they say, 24 hours sometimes is a long time in politics. Thank you very much to all my panelists for joining me on the debate.